अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब हम कर रहे हैं लेक्चर 34 MGT 501 का। तो स्टार्ट करते हैं। कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन ये है इस पे। तो एक्सप्लेन बर्न आउट, डिस्क्राइब कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन। ये बेसिकली है क्या चीज़, कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन। ये होती है, जाहिर है कि आप अगर जो किसी कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हैं तो वहाँ पर कम्युनिकेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आपको इंग्लिश आना ज़रूरी है, ठीक है। और इसी तरह से हर तरह से जो है कम्युनिकेशन में आपने वर्डिंग कैसे यूज़ करनी है, और फिर आपकी जो कम्युनिकेशन जस्ट नॉर्मल ही नहीं होती है, बिज़नेस कम्युनिकेशन भी उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। बिज़नेस कम्युनिकेशन में कौन कौन सी वर्डिंग यूज़ करनी है और उसको कैसे कैसे जो है वो उसको करना है, और आपकी बॉडी लैंग्वेज भी होती है उसमें कम्युनिकेशन में, ठीक है। वो हर चीज़ जो है होती है उसमें। और ये कम्युनिकेशन ख़ास कर जो है आपके वो प्रेजेंटेशन में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है। चलें स्टार्ट करते हैं। Burnout is a pattern of emotional, physical, and mental exhaustion in response to chronic job stressors. Symptoms of burnout: a feeling of lack of control over commitments, a belief incorrect that you are accomplishing less, and the growing tendency to think negatively, um, loss of a sense of purpose and energy, increased detachment from relationship. Avoiding burnout, reevaluate goals, reduce unnecessary commitments, learn to stress management skills, find out where the stress is coming from, family, job, etc. Follow a healthy lifestyle, get adequate rest, eat a balanced diet, get regular exercise, limit caffeine and alcohol, develop other interests, acknowledge your humanity. You have a right to pleasure and relaxation. Communication in organization, the transmission of information and understanding through the use of common symbols is termed as communication. नेक्स्ट ये हमारे पास द कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन कंटिन्यूस प्रोसेस is the exchange of information and meaning between people. Non-verbal communication. Non-verbal communication is the non-spoken aspects of communication, such as a person's manner of speaking, facial expressions, on body posture that express meaning to others. अभी मैंने ऑलरेडी बता दिया हुआ था कि कम्युनिकेशन किस किस तरह की होती है, ठीक है।
वही जो बॉडी लैंग्वेज वगैरह जो है वही यहाँ आया है कि फेस एक्सप्रेशन होते हैं, ठीक है। ये भी बॉडी लैंग्वेज में सारी चीज़ें ये जो हैं ये बॉडी लैंग्वेज में आती हैं। फेशियल एक्सप्रेशन है, बॉडी पास्चर है, उसके बाद ये सारी चीज़ें जो हैं एक्सप्रेस करती हैं मीनिंग को जो आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड वेज टू रिमूव these barriers. Individual barriers, organizational barriers, active listening. तो यहाँ पर है हमारा इंडिविजुअल बैरियर्स इंक्लूड perceptual biases which function as noise by affecting how the receiver gathers, organizes, and interprets information. Organizational barriers to effective communication include organizational culture and structure, status differences, and time. Active listening is a good way to minimize both individual and organizational barriers to effective communication. नेक्स्ट है हमारे पास filtering refer to manipulating information so that if it will be received more favorably. Filtering is most likely to occur where there is emphasis on status differences and among employees with strong career mobility uh, aspirations. Expect more filtering taking place in large corporations than in small business firms. What? With selective perception, information overload, emotions, language, ये सारी चीज़ें आती हैं हमारे उसमें कम्युनिकेशन में। तो सिलेक्टिव परसेप्शन क्या है कि जो भी आप कहना चाहते हैं बोलना चाहते हैं उसके लिए आपको जो है पता होता है, ठीक है। तो ये क्या है रिसीवर्स सी एंड हियर बेस्ड ऑन देयर नीड्स, मोटिवेशंस, एक्सपीरियंस, background, and other personal characteristics. Information overload happens when individuals have more information than they can sort out and use. They tend to select out, ignore, pass over, or forget information, etc. यहाँ है emotions when people feel that they are being threatened. They tend to react in ways that reduce their ability to achieve mutual advertising. Language, the meanings of words are not in the words, they are in us. Employees come from a diverse background and have different patterns of speech. Grouping of employees into departments creates specialists who develop
their own jargon or technical language. The problem is that members in an organization usually don't know how others with whom they interact have modified the language. People who suffer from it experience undue tension and anxiety or in oral communication, written communication, or both. Improving communication in organizations. तो इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में जो है कम्युनिकेशन को इम्प्रूव किया जाता है. Working with supervisors and managers, employees relations representatives can facilitate effective communications by developing and maintaining three types of programs: information dissemination, employee feedback, and employee assistance. तो ये सारी हमारी चीज़ें होगी इसमें. नेक्स्ट है हमारे पास इंफॉर्मेशन dissemination programs. Information dissemination involves making information available to decision makers wherever they are located. These include memos and newsletters, the employee handbook, written communications, memos, financial statements, newsletter, and bulletin boards, and audio visual communication. इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में क्या क्या आता है हमारा. एफबी भी हो सकती है, ज़ाहिर है हम इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन वहाँ से भी करते हैं. उसके बाद हमारी ईमेल भी आती है, व्हाट्सएप भी है, इंस्टाग्राम भी है, और बहुत सारी और भी साइट्स हैं, ट्विटर है, लिंक्डइन है. ठीक है. नेक्स्ट है मीटिंग्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकती हैं और फिज़िकल भी हो सकती हैं. इलेक्ट्रॉनिक कैसे हो सकती हैं? आप यूट्यूब से लाइव कर सकते हैं. उसके बाद जो है अगर यूट्यूब से लाइव करेंगे आप, बहुत सारे लोगों के साथ आप मीटिंग कर सकते हैं. उसके बाद अगर आप अपनी कंपनी एम्प्लॉय से ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे कि वो ठीक है. तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं. बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं और ट्विटर पे भी लोग कर रहे होते हैं मीटिंग्स, और हर जगह से वो की जाती हैं. उसके बाद यहाँ पर है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल और जियोग्राफिक बैरियर्स, रिट्रीट्स, इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस. ये हैं टू हमारे पास एम्प्लॉयज़ फीडबैक प्रोग्राम. तो ये जो है कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है. एम्प्लॉय एटीट्यूड सर्विस अपील्स प्रोसीजर्स, एम्प्लॉयज़ असिस्टेंस प्रोग्राम्स. ठीक है. तो नेक्स्ट है एम्प्लॉय असिस्टेंट प्रोग्राम्स. ये क्या होते हैं? ये भी हेल्प employees cope with personal problems that are interfering with their job performance. The formal and informal communication.
Formal communication networks that are designated by the organizational structures, charters, or other official documents. Informal communication. Informal communication follows outside of the firm's chain of command. How excellent companies foster informal communications, emphasizing informality, maintaining an extraordinary level of communication intensity, and giving communication to the physical support. Management by wandering around. The communication skill here is not in the wandering around the office but in the interpersonal communication skills you can bring to here bear when you are speaking with the employees. Levels of communication: upward communication, downward communication, horizontal communication। तो ये है हमारे पास कुछ कम्युनिकेशन के लेवल्स हैं। upward communication from subordinates to superiors provides management with valuable insights into how the organization is functioning, and provides superiors with feedback about whether subordinates understand orders and instructions. Downward communication is transmitted from superior to subordinate on subjects like corporate visions and mission. What the job consists of: performance evaluation, job instruction, and organizational policies and practices. Next, horizontal communication. Horizontal or literal communication are a message between departments or people in the same department. Communication in HRM. HRM depends upon the effective communication system in the organization for its success, because all its functions like staffing, compensating, performance appraisal, training, and development. It helps employees learn about company at their own pace, provides references regarding policies and roles and benefits, ensure HRM policies will be consistently applied, creates a sense of security and commitment of for employees, provides information of recruit
may be interpreted as implied contract should be updated continually, but the important thing is that these purposes can be achieved only if the employee handbook is well organized, clearly written, and legally limited. Communication methods inside the organization: employees handbook, bulletin board, communication, company newsletter, company wide meetings, digital media, etc. Are used as a source or method to communicate, while for the offsite employees facsimile machine emails and internet telephones are used as tools of communication of information. अच्छा, तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये मैंने ऑलरेडी पहले ही जो स्टार्ट किया था उस वक्त ही बता दी थी। यहाँ फिर से हमारी जो है की टर्म्स आ गई हैं: बर्न आउट एंड incapacitating condition in which individuals lose a sense of the basic purpose and fulfillment of their work. Communication, exchange of information between people, it occurs when the one person understands the meaning of a message sent by the other person and responds to it. Noise: all factors that interfere with the distort communication. Encoding process by which sender puts a message in a certain format to send to the receiver feedback, information about some behavior and its effect. Decoding process by which the receiver translates the sender's message into an understandable form. जी, तो हमारा 34th लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट लेक्चर 35th लेक्चर ये है, हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।